Hello dear students. Hi, how are you all? I think you are very fine at your home. So good morning to all of you and welcome to the previous class. So dear students, today we are going to learn about a good house. Yesterday we have learned the parts, the types of the houses that are kacha house and pakka house, and we have understood about this. Then we have learned about the parts of a house, and हर एक house में different types of parts होते हैं. Then we have learned about different rooms in a house. हमारे घर में अलग-अलग rooms होते हैं. We have learned about them. The first one is bedroom where we go to sleep. The second one is bathroom where we go to bath and use the toilet. Then the third one is kitchen that our mother cooks delicious food for us in which, and we eat food in a dining room. Dining room is also there for eating the food. And the last one, that is drawing room where we meet the people and we entertain our guests. So in this way we have 5 big rooms in our houses which are very most important, and some more rooms are also there in our house, that is called study room and something else. So वो इतना ज़रूरी नहीं होता, but कोई बनाते हैं, है ना. Study we can do in our bedroom by keeping the corner table, our study table. So after that I have given you one homework to read out the points of a good house. I hope you all have read it out. Now I am going to read out all the points, so you have to put the finger and repeat after me. The first point, it must be clean and tidy. अगर हमें अपना हाउस बहुत ही अच्छा रखना है तो इट मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी, उसे साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है. Then there must be wire mesh on doors and windows to let in fresh air and sunlight. Okay, हमारे doors और windows पे wire mesh होनी चाहिए, इस तरीके से हमारी windows एकदम close नहीं होनी चाहिए, है ना. So the fresh air comes in and sunlight also. After that, it must be free of dust, dirt, cobwebs and insects. You know, dear students, in our house there is dust and dirt, है ना. गंदगी हो जाती है, हम हर दिन उसमें रहते हैं, तो हर दिन हमें उसे क्लीन करना चाहिए. एंड cobwebs मतलब होता है मकड़ी के जाले. ओके, उनको भी क्लीन करना चाहिए. इवन ऑल्सो अगर हमारे घर पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, so we should keep it out, है ना, and clean our house. After that, fourth number point, there should be a market, school and hospital nearby. जहाँ हमारा घर होता है उसी के आसपास मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए. एकदम अलग एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप लोगों को आना जाना करना पड़ेगा, तो हमारा हाउस जो है वो हमेशा नियर बाय एरियाज पे रहना चाहिए. There must be green plants near and around the house. This is the most important thing. So we should have to do planting, है ना. हमें plants लगाने चाहिए ताकि हमें fresh air मिल सके, है ना. So plants near and around the house are most important. After that, the last one, the surrounding must be keep clean. यानी आसपास की जो एरिया होती है वो भी हमें साफ सुथरी रखनी चाहिए. हमारे घर के बाहर की जो आसपास की एरिया होती है that should also be clean, because वहीं से फिर गंदी चीजें, हमारे डस्ट और डर्ट हमारे घर के अंदर एंटर करती है. So in this way we have to keep the surroundings clean. After that, the things that you needed to clean the house. These are the 3 things which is given here for cleaning the house. Mop मतलब होता है पोछा. Then broom मतलब होता है झाड़ू. And the last one, vacuum cleaner. This is also a machine which help us to clean the house. ये एक टाइप की मशीन है जो हाउस क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. So these 3 are the things which we needed to clean our house. झाड़ू और पोछा सबके घर में लगता है ना. So that is called mop and broom. Okay, understood? What we call to mop, that is
पोछा. So आपको हमेशा आप इंग्लिश वर्ड्स यूज करने हैं because you are studying in a English school. So mop and broom. B-R-O-O-M, broom, M-O-P, mop. So we have seen these three things. After that, next turn the page. There is heading given, that is our dream house. Dream house. So in our dream house, what we think in our dream मतलब होता है सपना. हम देखते ना, हम भी काश एक अच्छे से घर पे रहते. सो अच्छा सा घर बनाने के लिए हमें कौन कौन हेल्प करता है? That is the most important part for making our dream house. So we all like to live in a beautiful house, but have you wondered who are people who make our houses? Let us meet some of them. तो ठीक है, अब हमारा ड्रीम हाउस हमें कौन बना के देगा? सो हमारा ड्रीम हाउस हमें कुछ ऐसे पर्सन्स बना के देंगे जो काफी हमारा हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग अवर हाउस. सो द फर्स्ट पर्सन इज आर्किटेक्ट. ARCHITECT. Architect. Architect makes a drawing and a design and a plan of a house. हमें हमारा घर किस तरीके का बनाना है, उसकी प्लानिंग और उसकी ड्राइंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट. द सेकेंड वन इज मैसन. MASON, मैसन. द मैसन लेज ब्रिक्स एंड बिल्ड द हाउसेज. जो दीवारें होती है घर की वो कौन बनाता है? मैसन. ओके, ले ब्रिक्स यानी एक के ऊपर एक ईंटा रख के और उसे जमाने का काम कौन करता है? मैसन. The third one is carpenter. Carpenter makes our favorite windows and doors within the houses. So carpenter हमारे लिए क्या बनाता है? Our furniture, windows, doors, sofa, beds. These all furnitures made by the carpenter, which we want to make in our dream house. After that, there is electrician, which joins all the electric wires. Okay, electrician who joins all the electric wires in our house and हमारे लिए अवेलेबल कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन अवर हाउस. द इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, लैंप्स एंड सॉकेट्स. अगर हमारे पास बटन ही नहीं होगा तो लाइट ऑन होगी क्या? नो. सो बटन, लाइट्स, ये हर जो काम करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन. देन देयर इज नंबर 5, दैट इज अ प्लम्बर. So plumber help us to fit the pipes, basins, tanks, है ना, in the bathrooms and even also outside area. So plumber जो है वो हमारा बाथरूम को बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल फिट करने के लिए हेल्प करते हैं. वो हमारे टैप्स बना के देते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से वाटर का यूज कर सके इन अवर हाउस. The last one, that is called painter. The most important thing, अगर आपका घर पूरा बन गया, ओके, घर आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर लिया, मैसन ने बना लिया, कारपेंटर ने आपको फर्नीचर बना दिया, इलेक्ट्रिशियन ने इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवा दी, प्लम्बर ने भी अपना काम कर लिया. सो अगर विदाउट पेंट, है ना, कुछ कलर ही नहीं होगा हमारे घर में, तो हमें वो घर अच्छा लगेगा क्या? नो. सो पेंटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. The painter paints the walls and ceilings of the house with beautiful colors, है ना. Beautiful colors देख के हमें हमारा ड्रीम हाउस और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. So ceilings मतलब होता है छत और आजू बाजू की दीवारें कौन पेंट करता है? That is called painter. So these are 5-6 persons which help us to make our dream houses. So what you have to do, dear student, you have to learn these spellings. So dear students, in this chapter we have learnt about houses protect us from heat, cold, rain, thieves, wild animals, dirt and dust. Second one, houses can be pakka or kacha depending on the materials used to build it, है ना. कौन से materials हमने use किए हैं for making a house, that
that mixtures of the kacha house and the pakka house. Kacha house is made up of mud, straw, bamboo sticks and dry leaves, and pakka house is made up of bricks, cement, mud, okay, stones, and that is cement. Okay, so these materials are used to make a pakka house. Hut, tent, caravan, igloo and houseboat are some type of temporary houses, that is kacha houses, and bungalows and apartments are called permanent houses, that is pakka houses. Kacha houses are temporary houses, वो कुछ टाइम के लिए बनते हैं, then we have to repair it, है ना, हमको उसके बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है because they are not very strong. But जो पक्का हाउस रहता है they are very strong because they are made up of bricks and cements. So they are permanent houses. हमेशा के लिए अगर हम एक बार घर बनाते हैं तो वो हमेशा के लिए बहुत अच्छे से बन जाता है. And the last one we have learned about the different parts and the different rooms in our house, है ना, हमने ये पढ़ा. Then we have learned about our dream house. Dream house हमें कौन बना के देता है? So these are the 6 persons which help us to make a dream house. I hope you all have understood each one of these what the works does, है ना. हर ये सभी लोग कौन सा काम हमारा ड्रीम हाउस बनाने के लिए करते हैं, आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. In this way we have completed our chapter. So dear students, tomorrow we will do exercise of this chapter and then we will write question and answers of it, and then we will complete our chapter. So dear students, in this way we have done 5 chapters. So I hope you all have understood from lesson number 1 to lesson number 5, and if you do not completed anything, do complete your work. अगर आपसे कोई वीडियो देखना मिस हो गया होगा तो सर्च इन द YouTube channel and you can watch it and complete your work, and do not forget to do your studies. Okay, so bye dear students. Your homework is you have to read out all full chapter of lesson number 5, that is houses and houses. Okay, आपको एक बार रीडिंग करनी है ताकि हम कल अच्छे से exercises and question and answers कर सकें. So bye dear students.